Hello everyone, I welcome you all to the wonderful session. In today's session, we'll be continuing the series. Just that we'll be taking 15 minutes out and we'll be discussing the current affairs for 27th to 28th of June. Also, we'll be covering the questions like 10 to 15 questions by the end of the session, इसी week की current affairs से related. So without further ado, let's begin. And here is the first question in front, first current affair in front of us. Arti Holla-Maini with Punjab roots appointed as the director of UN Office for Outer Space Affairs. So पहली बात हमें यहाँ पे appointment से related question always it has been asked in the examination. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे important points underline करेंगे जैसे कि हमने कल भी सीखा था. तो यहाँ पे first of all the name is very important as all of you already know. उसके बाद नाम के अलावा वो है क्या, उनका जो एक्सपर्टीज है वो क्या है. आरती होला-मैनी, a highly accomplished expert in the satellite industry of Indian origin, has been selected as the UN secretary. किसके लिए? For the outer space affairs, as you have already seen in here. इस न्यूज के बारे में आपको एक तो पता होना चाहिए, UNOOSA की फुल फॉर्म वो क्या है. UN यूनाइटेड नेशंस हो गया, ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स. ठीक है, इन कहाँ पे ये है, कहाँ पे? बेस्ड इन वेना. ओके, नाम हमने पढ़ लिया. इट्स आरती होला. कहाँ से? फ्रॉम पंजाब. गुड इनफ नोबल, it is L over here, who gave the world line batteries passes away. So इसमें अब हमें क्या करना है? Basically it is related to obituary, जहाँ पे we are given with the name of the person and बताया गया है कि the person is no more. So the American co-inventor of the lithium ion batteries, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है John Bannister Goodenough. तो इनका पूरा नाम Goodenough नहीं है, it is John Bannister Goodenough has passed away. और इनको 2019 का नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री. Okay, so I hope it is clear to everyone. Moving on to the next news, साथ साथ सब कुछ note down करते जाएंगे. Moving on to the second news for the day, third news for the day. It is Priya A.S received Sahitya Akademi Award 2023 for children's literature. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कुछ भी अवार्ड रहता है तो हमें पढ़ना उसको रहता है. सो प्रिया एएस जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, इनको ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में के लिए. और इनका जो नॉवल था उसका क्या नाम है? द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड. ओके, तो ये आपको नाम याद करना है एंड जिसको अवार्ड मिला है वो याद करना है. उसके बाद है जुलन गोस्वामी, द हेजर नाइट, इयन मॉर्गन, जॉन, अच्छा, ज्वाइन एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी. तो यहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को जिन जिन ने ज्वाइन किया है, दोज द नेम्स आर बीइंग गिवन टू अस, उनके बारे में. सो इट इज जुलन गोस्वामी, हेदर नाइट एंड इयन मॉर्गन ने ज्वाइन किया है एमसीसी. इनको एक्सपैंड किया गया है, इनके जो रैंक्स हैं कैसे, 3 मेंबर्स को इन्होंने ऐड करके अपनी जो कमेटी है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है. ठीक है, तो ये आपको नाम याद करना है, जुलन गोस्वामी, हेदर नाइट एंड Ion Morgan. उसके बाद moving on to next news, what we have in here is the 8th edition of world largest urban cleanliness survey begins. तो यहाँ पे क्या है, ये एक जो 8th एडिशन है इसकी, इसका मतलब इससे पहले भी 7 एडिशंस हो चुकी हैं ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है. इसके बारे में व्हेन फर्दर इट विल बी हैपनिंग, तो हम इनके बारे में पढ़ते रहेंगे. जो फिलहाल थोड़ा बहुत मतलब क्योंकि वो बिगिन हुआ है ना, जो थोड़े बहुत इसका बेसिस है हम वो पढ़ लेते हैं कि द फील्ड असेसमेंट ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड. एंड इसको लॉन्च कौन कर रहा है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट इट हियर. So it is Ministry of Housing and Urban Assessment. ठीक है, ये 1 जुलाई से शुरू होगा. स्वच्छ भारत मिशन का ही एक पार्ट है अर्बन क्लीनलीनेस का, एंड दैट इज इट. ठीक है, अगर इसका हमें बताना है थीम तो इट इज मेरा शहर. अगेन इंपॉर्टेंट है ये काफी, मेरा शहर मेरी पहचान. थीम पूछी जाती है हमेशा, एक थीम आती है एग्जामिनेशन में. सो नेक्स्ट इज आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 लॉन्चेस इनटू स्पेस. तो यहाँ पे इसके बारे में इतना ही पढ़ना है जो आपके सामने गिवन है. यू हैव टू लर्न अबाउट इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज.
It is Rohit Jawa appoints as MD and CEO of Hindustan Liver. तो इसमें तो the name is given, company is given, that is it about this news. ठीक है, तो इनको हायर किया गया, अपॉइंट किया गया है the managing director and the CEO, the chief executive officer of the Hindustan Liver Limited. ठीक है, उसके बाद है RBI imposes penalties on Standard Chartered Bank ₹1 crore fine on 4 credit bureaus. ठीक है, अब किसके लिए, क्योंकि KYC डायरेक्शंस को नॉन कॉम्प्लायंस होती है, जो रूल्स इशू किए होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया होता, तो ये सब चीजें आती हैं. सो यू हैव टू जस्ट लर्न द नेम ऑफ द बैंक. कल का अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे देयर वर 3 बैंक्स जिनको RBI ने पेनल्टी इंपोज की थी. Have in front of us is कि World Bank approves USA 300 million loan to improve the education. कौन सी स्टेट के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए. तो इसके अंदर अब हमारे को जो याद रखना है वो स्टेट याद कर रखना है कि कौन सी स्टेट के लिए है, दैट इज छत्तीसगढ़. अमाउंट याद करनी है, दैट इज $300 million एंड किसने अप्रूव किया, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, सो इट इज वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो ये हमने इस न्यूज के लिए इतना कवर कर लिया. नेक्स्ट इज द टाटा टेक्नोलॉजीज IPO गेट्स अप्रूवल फ्रॉम SEBI. So it is SEBI. Now what it is Securities Exchange Board of India. Now every one of you has to tell me कि IPO की full form क्या होती है in the chat. ठीक है, IPO बताना है क्या होता है, what is the full form of it, and in tomorrow's lecture I'll be telling you the meaning of it. Okay, चलिए, so moving on. Shri Narayan Rane launches Champions 2.0 portal and the key initiatives for MSMEs on International MSME Day. Now in yesterday's class we learned when is the MSME Day, right? तो सबको चैट बॉक्स में बताना है कि MSME Day कब होता है. And on the occasion of this MSME International MSME Day, the MSME की फुल फॉर्म भी एक बार बता देती हूँ. It is Micro Small Medium Enterprises. सेलिब्रेट उन्होंने किया है उद्यमी भारत MSME डे. ओके, तो इसका यहाँ पे लॉन्च किसने किया है, द नेम इज श्री नारायण राणे. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रैंकिंग से रिलेटेड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 हैज बीन रिलीज्ड, जिसके अंदर बताया जाता है द टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग. ठीक है, ओवरऑल होता है ये. तो ये यहाँ पे इसका जो आंसर है दैट इज MIT. MIT की फुल फॉर्म सारे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे. विच ओके, सो यू विल बी टेलिंग मी, आई विल बी लेटिंग यू नो इन टुमारोज क्लास. ओके, तो यहाँ पे हमने MSME के डे के बारे में भी पढ़ लिया. उद्यमी भारत जो है यहाँ पे इंडियन नेम इसको दिया गया था ऑन द इंटरनेशनल MSME डे, वो भी पढ़ लिया. एंड नाउ यू हैव 3 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन है MSME डे कब होता है. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड दिस. MIT की फुल फॉर्म बतानी है. एंड वन मोर क्वेश्चन ऑलरेडी इज बीन गिवन. ओके, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन फर्दर. So what we have is the question and answer now. We are already done with the current affairs for 2 days. So now अब हम पहुंचेंगे इनके जो हमारे पास question answers हैं 10 to 15 होंगे. So what is the purpose of Sagar Samajik Sahayog CSP guidelines launched by Sarbananda Sonowal to empower the courts to address local community issues. तो यहाँ पे कुछ एक options रहेंगी जिसके अंदर से what we have the answer is given to you in front of you. Okay, so next question what we have, how will the CSR budget be allocated for the courts based on their net profile. The CSR budget allocation varies based on the net profile of courts with option ranging from 3 to 5%, 2 to 3% or 0.5 to 2%. ओके, ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया. अब ये रेंजेस याद करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इन रेंजेस के हिसाब से. लेट्स मूव ऑन. Moving on, what we see is the question number 3. What is the name of the portal launched by Shri Narayan Rane for MSME support? अभी हमने करा है it is Champions 2.0 portal, right? तो यहाँ पे हमने एक डिस्कस भी किया था कि इसका जो डेट है वो आपको बताना है. Which app was launched to facilitate geotagging of cluster projects and technology centers? So the name is Geotag MSME. Give me a minute. यहाँ आ जाएगा tag. ठीक है, this mobile app called Geotag MSME was launched to enable the geotagging of cluster projects and technology centers जो कि associated है किसके साथ, again MSME के साथ, because it was International MSME Day. So we have a lot of stuff related to it. And एक question तो फिर MSME से related for sure हम expect कर सकते हैं. Moving on, what we have next is the question number 5.
So it is which regulatory body approved the IPO of the Tata Technologies? It is SEBI, which is Securities and Exchange Board of India. IPO की full form I have already asked you. So I'll be telling you it is initial public offering. Okay, we had 3 questions. Already I've deducted 1. Now you are left with 2 questions to answer in the comment box. Which university has been consistently topped the QS World University ranking for 12 consecutive years? Again, I asked you the full form of MIT. It is already written in the answers. So you are already done with 2 questions being asked. You are left with 1 only now. Moving on, how many Indian universities are included in the QS World Ranking 2024? The answer you need to know is it is 45. Okay, so which organization collaborated with the Ministry of MSME to establish a center of excellence for supporting ST and ST entrepreneurs? So it is National Small Industries Corporation, which is NSIC. Full form iski yaad rakhni padegi aapko. It is in the collaboration with let me write it for you, LG Electronics India Private Limited. ठीक है, इन दोनों का collaboration है, so आपको second name भी याद होना जरूरी रहेगा. Moving on, what we have next in the question number 9. Which financial company is planning to raise rupees 1200 crore through IPO? What is IPO? Again, we all read it about. So it is initial public offerings. और ये 1200 crore जो कर रहा है issue through an IPO is SBFC Finance. Question number 10 is which university is the only Asian institution to break into the top 10 for the QS World Ranking 2024? It is NUS, that is National University of Singapore. Moving on to the question number 11. In which year did John Bannister Goodenough win the Nobel Prize? I have already told you it is 2019. For which novel did Priya A.S receive the Sahitya Akademi Award? Already we've done the revision in this session. जो हमने पहले question पढ़े हैं, उससे जो हमने current affairs पढ़े हैं, उसी से related अब हम questions भी कर रहे हैं. The children who never with it. Okay. Moving on is what is the Uniform Civil Code in India? So an interesting question, a different one, right? So a law that codifies personal laws of citizens irrespective of gender, sexual orientations, and religions. Next one, the second last one. Which committee was created in 1941 to codify Hindu law due to an increase in legislation addressing personal concerns at the end of British rule? The Rao Committee. ये हम हिंदू से पिक करते हैं क्वेश्चंस एंड जो कुछ भी हमारे पास करंट अफेयर्स रहते हैं, तो